Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. I just wanted to sit down and talk to you guys about something that's been on my mind since a while now. एक दिन मैं ऐसे ही बैठे हुए सोच रही थी कि लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जो पर्सन मैं अपने 20s में थी और अब जो मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। आई हैव कम्प्लीटली आउटग्रोन दैट आइडेंटिटी ऑफ मी। जो चीज़ें तब नॉर्मल लगा करती थी वो अब क्वेश्चनेबल लगती है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैं बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेती थी लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी। But I think with all of this, I am still growing, I'm still evolving. And I know that a lot of you people also must be in a similar phase in your life where you're still discovering yourself. You want to know more about yourself or your life's purpose. So I really hope that this video finds you at the right time. And if there's even one thing that you can take away from this video, I guess I would be really glad that I was of some help to you. So, lately, I've been thinking a lot about the things that I'm unlearning in my 30s, and this video is exactly about that. So, I would be sharing some life lessons that I have learned so far and things that I've unlearned in this journey. So, the first thing that I'm unlearning in my 30s is this constant feeling of running out of time. And I think it's a big one because most of us feel this undue pressure from society, from parents, or from our peers that, everybody else is ahead of us and we are just somehow falling behind no matter what we do. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन एज पे आपका करियर सेट हो जाना चाहिए, एक सर्टेन एज पे आपकी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और अगर ये सब टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होता तो फिर लगता है दैट वी आर फॉलोइंग बिहाइंड, या हम बहुत पीछे रह गए और बाकी सब हमसे बहुत आगे बढ़ गए। बट लेटली आई हैव बीन रियलाइजिंग कि लाइफ लेट नहीं होती है, इट जस्ट अनफोल्ड्स इन लेयर्स। सब चीज़ का अपना टाइमलाइन है और वो तभी सेंस बनाती है। So there's no point in rushing or like taking this undue pressure on yourself, because timelines force करने से सिर्फ pressure बढ़ता है और कुछ productive तो नहीं होता. Another thing that I'm unlearning in my 30s is explaining myself to everyone. पहले मुझे लगता था कि अपने हर डिसीजन को जस्टिफाई करना ज़रूरी है दूसरों को, कि why I'm doing this, why I'm doing that, why does my life look a certain way. बट नो, ऑनेस्टली हर किसी को आपका प्लान या जर्नी समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स टायरिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर इज जस्ट नो पॉइंट इन डूइंग दैट. And sometimes silence is the best answer, honestly. Another big thing that I'm unlearning in my 30s is tying my worth to productivity. So for the longest time, I have thought that productive रहना ही important रहना है, क्योंकि अगर आप productive नहीं हो तो आप relevant नहीं हो and you're just not worth anything. But that's not true, because you're allowed to take rest. Rest नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आप constantly hustle करते रहोगे तो आप ज़्यादा productive हो जाओगे. Resting is not laziness, rather it's maintenance. The next big thing on my list of unlearning is comparison. Well, as they say, comparison is the thief of joy, and it's absolutely true, because what you see on social media, people enjoying living their best life, being successful, and all of that, that's very different and far from reality. बिकॉज कंपैरिजन सिर्फ हाईलाइट्स में ही होता है, राइट? कोई भी अपने रियल लाइफ नहीं दिखाता है। आप हमेशा अपने अच्छे मोमेंट्स और अपने अचीवमेंट्स ही दिखाते हो, बट यू डोंट नो द स्ट्रगल्स बिहाइंड दोज पर्टिकुलर रील्स और दोज वीडियोज और दोज पोस्ट. So comparing yourself with others, not only on just social media but in general in life as well, I think it's very toxic and it's very draining for yourself. आप सिर्फ उस लूप में फंस जाते हो कि मेरी लाइफ उससे बेटर कैसे हो, या why are they more successful than me and all of that. So ये comparison करना is also very very wrong, and that's what I'm unlearning in my 30s now. The last but the most important thing on this list of unlearning is this idea that I need somebody's permission to change. See, with age, obviously you evolve and you grow, and the people that you used to like earlier, maybe they start feeling annoying to you now. The places that you used to love to go to, they don't seem that exciting anymore. The thoughts that you used to have, you find them very immature now.
So there are people, places, experiences that you've outgrown completely. But इस चीज़ के लिए ना पहले गिल्ट होता था कि यार व्हाई डू आई फील डिफरेंट, और व्हाई डू थिंग्स फील डिफरेंट नाउ, पहले जैसा नहीं है. सो आपको कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं माइंड में लगता है कि आई एम चेंजिंग, बट एम आई अलाउड टू चेंज. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम लर्निंग नाउ, दैट इट्स completely okay to change, and you will change in your life. Nothing remains constant. एंड जो इवॉल्व करता है आई थिंक वही सक्सेसफुल हो पाता है, बिकॉज आपको टाइम के साथ बदलना पड़ता है. एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, एंड you're allowed to change. You're allowed to want more, and you're allowed to move away from things that do not make sense anymore. So if you are also in your early 30s, और ऑनेस्टली आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ की, एंड इन पॉइंटर्स में से आपको कुछ भी रिलेटेबल लगा हो, और इफ़ यू थॉट दैट येस दैट्स एग्जैक्टली मी, और दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, then just know that you're not behind, you're not alone. Everybody feels this way, एज के साथ आप चेंज होते ही हो. बट इसमें से किसी भी चीज़ ने अगर आपको कहीं पे हेल्प किया, या फिर दिस रेजोनेट्स विद यू, then please do let me know in the comments below. I would love to know your stories, your suggestions, your advice and opinions. And please like this video and share it with someone that you know might need this right now in their life. And subscribe to my channel. I hope to build a community of like minded people so that we can share our thoughts together and, yeah, just create like a happy place, a happy community here. Thank you so much for hanging out with me today. I'll see you in the next one.